Hello, today we'll study different acts in details. So, starting with Charter Act of 1813. So, it abolished the trade monopoly of the company in India. Secondly, however, the monopoly of the company over trade in tea and trade with China was continued. Third, it allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people. So, अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ट्रेड मोनोपोली जो कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में हो रखा था उसको एबॉलिश कर दिया गया एंड सेकेंडली हाउएवर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना वाज कंटिन्यूड एंड थर्डली क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया इंडिया आकर अपने रिलीजन को प्रीच करने के लिए. नेक्स्ट एक्ट इज 1833. So it made the Governor General of Bengal as Governor General of India. So पहले क्या था कि गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया. एंड नाउ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज लॉर्ड विलियम बेंटिक. सो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. Next act is Charter Act of 1853. So, this act is considered as significant constitutional landmark. It established a separate Governor General's Legislative Council, which later came to be known as Indian Central Legislative Council. It also appointed Macaulay Committee, that is Committee on Indian Civil Services, and it was appointed in the year 1854. So under Charter Act of 1853, this act is considered as significant constitutional landmark. Under this act एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेब्लिश किया गया जो कि लेटर जाके इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा. एंड ऑल्सो मैकुले कमेटी को भी अपॉइंट किया गया ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज जो कि अपॉइंट किया गया इन द ईयर 1854. Next act is Government of India Act of 1858. So this act was enacted in the wake of Sepoy Mutiny, that is also known as Revolt of 1857 and First War of Independence. This act is also known as Act of Good Government of India. It abolished East India Company and transferred the powers of the government, territories and revenues to the British Crown. It also changed the designation of Governor General of India to Viceroy of India, and first Viceroy was known as Lord Canning. So Lord Canning became the first Viceroy of India. It also ended system of double government by abolishing the Board of Control and Court of Directors. So under Government of India Act of 1858, this act is also known as एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये जो एक्ट आया था ये एक्ट आया था इन द वीक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं या फिर सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है. एंड अंडर दिस एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको एबॉलिश कर दिया गया था एंड द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज वेर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन. सेकेंडली इससे पहले क्या था कि गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया था वो लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था. एंड सेकेंडली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो विलियम बेंटिक को बनाया गया था. एंड थर्डली अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गया है. सो द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग. एंड अंडर दिस एक्ट इट ऑल्सो एंडेड डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. जो डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था इन पिट्स एक्ट ऑफ 1784, अब उस डबल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया गया अंडर दिस एक्ट ऑफ 1858 बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. Next act is Indian Council Act of 1861. So this act is an important landmark in the constitutional and political history of India. ओके. एंड अर्लियर क्या था कि जो इंडियंस जो थे उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में या फिर कोई लॉ मेकिंग प्रोसेस में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था. बट आफ्टर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लॉर्ड कैनिंग जो कि उस टाइम के वाइसरॉय थे उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दे वेयर राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव.
So, under Indian Council Act of 1861, इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाने लगा लॉ मेकिंग प्रोसेस में, और उस दौरान लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। मोर ओवर, जो पोर्टफोलियो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन द ईयर 1859, उसको भी रिकॉग्निशन मिला अंडर दिस एक्ट ऑफ 1861। ओके, now next is Indian Council Act of 1892. So it gave powers of discussing budget to the executive. तो under this act of 1892 executive को power दे दिया गया ताकि वो budget को discuss कर सके। Next act is Indian Council Act of 1909. So this is the most important act. This act is also known as Murray-Minto reforms. That is, Lord Murray was then Secretary of State for India and Lord Minto was the Viceroy of India. That's why this act is also known as Murray-Minto reforms. Under this act, Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join Viceroy's Indian Council as law member. It also introduced a system of communal representation for Muslims, and a concept of separate electorate was also introduced under this act. Under this act, it legalized communalism, and Lord Minto came to be known as father of communal electorate. So, Lord Minto is known as the father of communal electorate. So, under Indian Council Act of 1909, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मुर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड मुर्ले जो कि उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय, इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट को ऑफ 1909 को मुरली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अंडर दिस एक्ट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि इंडियन ओरिजिन के थे उनको ज्वाइन कराया गया था वाइसरॉयज के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एज लॉ मेंबर, एंड इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम और सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर दिस एक्ट, एंड मोर ओवर कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया था अंडर दिस एक्ट, एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। Now, next act is Government of India Act of 1919. So, this act is also known as Montague-Chelmsford reforms. क्यों? Because Montague was the Secretary of State for India and Chelmsford was then Viceroy of India. That's why Government of India Act of 1919 is also known as Montague-Chelmsford reforms. It relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. It divided the provincial subjects into transferred and reserved subjects. Dual scheme of governance, that is known as diarchy, was also introduced under this act. It also introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. Legislative council was replaced by bicameral legislature, consist of upper house, that is council of state, and lower house, that is legislative assembly. So under Government of India Act of 1919, Government of India Act of 1919 को Montague-Chelmsford reforms भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि Montague was the Secretary of State for India and Chelmsford was the Viceroy of India at that time. अंडर दिस एक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स और सेंट्रल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था। फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था इनटू 2 पार्ट्स एंड दे वेयर रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। और डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसको डबल रूल भी कहते हैं, दैट इज डायरकी, वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस एक्ट। और बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन सबसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर दिस एक्ट। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय कैमरल लेजिस्लेचर से, जो कि कंसिस्ट किया करता था 2 हाउसेस को। द फर्स्ट इज अपर हाउस, दैट इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड अ लोअर हाउस, दैट इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। Moreover, it also established Public Service Commission, and Central Public Service Commission was set up in the year 1926. Under this act, we will study about 2 more important things. That is, first one is Simon Commission and the second one is Communal Award.
So under Simon Commission, November 1927, in November 1927, British government appointed a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon. क्यों? In order to report on the condition of the India under its new constitution. Members of the commissions were British, so parties boycotted this commission. Thirdly, commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of diarchy and establishment of Federation of British India and princely states. सो अंडर साइमन कमीशन जो है नवंबर के 1927 में लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो जिन्होंने अपॉइंट किया था एक 7-मेंबर स्टेटरी कमीशन को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन. क्यों? टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. लोगों ने, पार्टीज ने इस कमीशन को बॉयकॉट कर दिया. क्यों? क्योंकि जितने भी मेंबर्स थे साइमन कमीशन के अंडर वो ब्रिटिशर्स थे. एंड थर्डली, ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया 1930 में और इस रिपोर्ट में इन्होंने रिकमेंड किया कि एबॉलिशन कर देंगे डायरकी का, एस्टेब्लिशमेंट कर देंगे फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया का और प्रिंसली स्टेट्स का. फिर भी पीपल ने इस कमीशन को बॉयकॉट कर दिया. क्यों? बिकॉज ऑल द मेंबर्स वेर ब्रिटिशर्स ओनली. Now the second one is communal award. So communal award was came in the year 1932 in August. So रामसे मैकडोनल्ड, जो कि उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ही अनाउंस्ड अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द माइनॉरिटीज एंड विच केम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड. Gandhi ji, after hearing to this, became distressed and he undertook fast into death in Yadavada jail that was located in Pune. An agreement between the leaders of Congress and depressed classes was signed that later came to be known as the Pune Pact. It retained the Hindu joint electorate and gave reserved seats to the depressed classes. So कम्युनल अवार्ड के अंदर ये कम्युनल अवार्ड जो है वो अगस्त के 1932 में आया था. जो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने इस अवार्ड को लाया था, इस स्कीम को लाया था फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ विच लेटर केम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड. गांधी जी इस अवार्ड को, इस स्कीम को सुनने के बाद वो बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हो गए, दुखी हो गए और ही अंडरटुक फास्ट इनटू डेथ इन यादवादा जेल इन पुणे. सो इसी के रिएक्शन में एक एग्रीमेंट साइन किया गया इन बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो कि उस एग्रीमेंट को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाने लगा दैट रिटेन द हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गिव रिजर्व्ड सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस.